Hello people, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. I hope you all are doing good. So today we continue NCERT class 11th part A Statistic in Economics chapter 4 Presentation of Data. Before moving ahead, let me tell you this channel is about the subject economics. So you will get all the topics from class 9 to 12 economics subject in the playlist. So if you are an economics student, please do subscribe this channel so that you will get all the notification of the upcoming videos. Don't forget to like, share and comment कि आपको videos कैसी लग रही है. Today's topic is tabulation of data. Tabulation is a systematic and logical representation of numeric data in rows and columns to facilitate comparison and statistical analysis. सो टैबुलेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है डेटा का into the rows and columns to do the statistical analysis of the particular data. For example, tabulation of data on the population of the world. Okay, so the next topic is types of tabulation. The tabulation may be one way, two way एंड थ्री वे. तो वन वे क्लासिफिकेशन में एक ही फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन. टू वे क्लासिफिकेशन में किसी भी दो फैक्टर्स के बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया जाता है, और थ्री वे क्लासिफिकेशन में किन्हीं थ्री फैक्टर्स को लेकर उसको एनालाइज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट आर द पार्ट्स ऑफ अ टेबल कि टेबल को हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज टेबल नंबर, सेकेंड टाइटल, कैप्शन और कॉलम हेडिंग, stubs or row headings, body of the table, unit of measurement, source, and the last one is note. Today we are going to talk about table number. It is assigned to a table for identification purpose. If more than one table is presented, it is a table number of distinguish one table from another. तो tables जो होंगी वो अलग अलग होंगी. It is given at the top at the beginning of the title of the table. Generally, table numbers are whole numbers in ascending order if there are many tables in a book. So हम उनको ranking कर देते हैं, table 1.1, table 1.2 and so on, that the researcher could easily find the particular table. So the next is the title of the table. It narrates about the content of the table. It has to be clear, brief and carefully worded so that the interpretation made from the table are clear and free from ambiguity. Means जिस डेटा के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो. Also it finds places at the head of the table, succeeded the table number. टेबल के टाइटल को पढ़कर हमें समझ आ जाना चाहिए कि टेबल किस चीज़ के बारे में. टाइटल शुड बी क्लियर एंड इन ब्रीफ. मीन्स टाइटल को पढ़ के कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डाटा एक्चुअली है किस बारे में. नेक्स्ट इज द कैप्शंस और common headings. At the top of each column in a table, a column designation is given to explain the figures of the column. This is called caption और column heading. हर कॉलम के ऊपर एक हेडिंग गिवन होती है. वो हेडिंग हमें बताती है कि उस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, किस चीज़ का डेटा गिवन है. एंड द सेम गोज विद द रो हेडिंग्स नोन एज द स्टब्स. लाइक अ कैप्शन or a column heading, each row of the table has to given a heading. The designation of the row are also known as stubs or stub item, and the complete left column is known as stub column, and a brief description of the row headings may also give at the left hand top of the table. This is the position of the heading. Next is the body of the table. It is the main part and it contains the actual data. Location of any one figure data in the table is fixed and determined by the row और कॉलम ऑफ द टेबल. ओके, सो एक पर्टिकुलर डेटा की लोकेशन कैसे फाइंड आउट होती है? बाय इट्स रो एंड इट्स कॉलम. नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. दिस द फिगर्स इन द टेबल actual data should always be stated along with the title. If different units are there for a rows and columns of a table, these units must be stated along with the stubs or captions. If figures are large, they should be rounded up and the method, तो उस फिगर को राउंड फिगर बना दिया जाता है. Next are the sources. It is a brief statement or phrase that indicating the source of data presented in the table. Means कि डेटा को कहाँ से लिया गया है. If more than one source is there, all the sources are to be written in the source
सोर्स इज जनरली रिटन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो जितने सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया गया है उसको हमें मेंशन करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज नोट। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। इट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डेटा, कंटेंट ऑफ द टेबल which is not self-explanatory and has not been explained earlier. So note जो है वो एक last part है table का. It is mentioned in the table. It contain the specific feature of the data. Okay. So this topic is over here. I hope आपको समझ आया होगा. And thank you so much for supporting and watching this video. Comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, please do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming video. Thank you.